Solids are least compressible, whereas gases are the most compressible. Gases are about 1,000,000 times more compressible than solids. Gases have large compressibilities which vary with pressure and temperature. The incompressibility of solid is primarily due to the tight coupling between the neighboring atoms. The molecule in liquid are also bound with their neighbor but not as strong as in solids. Molecules in gases are very poorly coupled to their neighbor. The table shows the various type of stress, strain, elastic moduli and the application state of a matter at a glance that we had studied. Now the question is, the average depth of Indian Ocean is about 3000 meter. Calculate the frictional compression delta V by V of water at bottom of the ocean given that the bulk modulus of water is this. हमें पता है bulk modulus क्या होता है, stress by में volumetric strain है ना. तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन यानी कि डेल्टा वी बाई वी, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय बी. बी की वैल्यू गिवन है 2.2 इंटू 10⁹ आपा को निकालना है स्ट्रेस. तो स्ट्रेस किसके बराबर आ जाएगा, कितना प्रेशर एक्सर्टेड हुआ है, वही होता है ना. जैसे आप लेटल की बात करते हैं तो वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. जब वॉल्यूमेट्रिक की बात करते हैं तो वो आ जाता है अपने पास प्रेशर के बराबर. और प्रेशर होता है अपने पास एच रो जी. हाइट है 3000, डेंसिटी है वाटर की 1000 kg/m³, और एच रो जी, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बस सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है पॉइजन्स रेशियो. द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन. आपको पता है जब आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया होता है कंप्रेशन के लिए या फिर इलोंगेशन के लिए, वो अपने पास जो लेंथ में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन. सिम्पसन पॉइसन पॉइंटेड आउट दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर हुक्स ने क्या बोला था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. लेट्स सी पॉइसन ने क्या बोला है. Simon Poisson pointed out that within the elastic limit, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. जो lateral strain होता है वो directly proportional होता है किसके, longitudinal strain की. lateral कौन सा होता है अपने पास, diameter वाला, और longitudinal कौन सा होता है, length वाला. बस. The ratio of lateral strain to the longitudinal strain in a stretch wire is called Poisson's ratio. If the original diameter of wire is d and the contraction of the diameter under stress is delta d, then lateral strain is delta d by d. If the original length of wire is L and elongation under stress is delta L, the longitudinal strain is delta L by L. Poisson's ratio is then delta d by d, delta L by L or delta d by L. ठीक है, इंटू में L बाई डी. पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन्स. पॉइजन रेशियो है जो वो किसका रेशियो है, पॉइजन रेशियो होता है दो स्ट्रेन्स का. कौन से स्ट्रेन, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल. It's a pure number, has no dimensions, no units. Its value depend only on the nature of the material. For steel, the value is between 0.28 and 0.30, and for aluminium alloy it's about 0.33. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है स्ट्रेच वायर में. व्हेन अ वायर इज पुट अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, work is done against the interatomic force. This work is stored in the wire in the form of elastic potential energy. When a wire of original length L and area of cross section A is subject to a deforming force F along the length of the wire, let the length of the wire be elongated by L. जो elongation है जिसको अपन डेल्टा L लेते हैं उसको इसने लिया स्मॉल l. Then from equation 8.8 we have force की वैल्यू क्या होगी, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया, और वाई में डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल क्या है स्मॉल एल. वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलोंगेशन. नाउ फॉर द इलोंगेशन ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ डी एल, वर्क डन डी डब्ल्यू इज एफ डी एल. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एल, यानी कि एफ की जगह वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से वाई ए एल बाई एल, तो वही आ जाएगी. अब देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम एल टू एल प्लस 1, दैट इज़ फ्रॉम एल की वैल्यू 0 से लेके एल की वैल्यू 1 तक. इलोंगेशन 0 से लेके 1 तक हो गई. ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी लेंथ एल, बाद में कितनी होगी एल प्लस 1. इलोंगेशन कितना हो गया 1, 0 से लेके 1 तक का क्या हो गया, चेंज आ गया लेंथ में. तो देखो वैल्यूज़ पुट करेंगे, डब्ल्यू क्या आ जाएगा, बाई ए एल बाई एल डी एल. ठीक है, बाई ए बाई एल तो अपने पास हो जाएगा कॉन्स्टेंट. एल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2. हम क्या करेंगे, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल से डिवाइड कर देंगे. ऐसा करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 बाई और स्मॉल एल बाई कैपिटल एल का स्क्वायर ऊपर कैपिटल एल इंटू ए. ये आने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ ऑफ बाई यंग्स मॉडुलस, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन का स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगी वॉल्यूम. तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ
यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमारे पास? यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ऐसा करेंगे तो ये वाले स्ट्रेन से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो वर्क डन स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल. The elastic behavior of material plays an important role in everyday life. All engineering designs require precise knowledge of the elastic behavior of material. For example, while designing a building, the structural design of the column, beam and supports require knowledge of the strength of the material used. Have you ever thought why the beam used in the construction of bridge or supports have a cross section of the type I? Why does a heap of sand or hill have a pyramid shape? Answer to these questions can be obtained from the study of structural engineering, which is based on the concept developed here. Cranes used for lifting and moving heavy loads from one place to another have a to which the load is attached. The rope is pulled up using pulley and motor. Suppose we want to make a crane which has a lifting capacity of 10 ton or 1 metric ton. 1 metric ton is 1000 kg. How thick should the steel rope be? We obviously want that the load does not deform the rope permanently. Therefore, the extension should not exceed the elastic limit. From table 8.1, we find that mild steel has a yield strength of about 300 into 10 raised to power 6 Newton per meter square. Thus, the area of cross section of the rope should be greater than W by में stress. जैसे स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, एरिया निकालना है तो अपने पास क्या आ जाएगा, लोड पर यूनिट स्ट्रेस आ जाएगा। तो देख लो उसकी वैल्यू पुट कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडियस ऑफ अबाउट 1 centimeter for a rope of circular cross section. Generally, a large margin of safety is provided. Thus, a thicker rope of radius about 3 centimeter is recommended. A single wire of the radius would practically be rigid rod, so the ropes are always made of number of thin wire bridged together like in pigtails for ease in manufacture, flexibility and strength. A bridge has to be designed such that it can withstand the load of the flowing traffic, the forces of the wind and its own weight. Similarly, in the design of building, the use of beam and column is very common. In both the cases, the overcoming of the problem of bending of beam under a load is of prime importance. The beam should not bend too much or break. Let's consider the case of a beam loaded at the center and supported near its end as shown in the figure. A bar of length L and breadth B and depth D, when loaded at the center by a load W, seizes by an amount that is given by delta is given by, you have to just memorize the formula, delta that is equal to, डेल्टा इज़ कितना उसके अंदर वो नीचे हैंग हो गया है, दैट मच इज़ डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 बी डी क्यूब वाई। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ब्रेथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसके क्यूब के प्रोपोर्शनलिटी होगी कि उसके अंदर डिप आ जाए, जितना ज़्यादा ब्रेथ होगी उसमें डिप उतना ही कम आएगा, उतना ही कम वो हैंग होगा नीचे। तो फॉर द आइडियल कंडीशन इट्स लेंथ शुड बी मिनिमम एंड ब्रेथ शुड बी मैक्सिमम. The relation can be derived using what you have already learnt and a little calculus. From equation that we see that to reduce the bending of a given load, one should use a material with a large Young modulus. For a given material, increasing the depth rather than the breadth B is more effective. डेप्थ को इंक्रीज़ करो, क्योंकि डेप्थ का क्या लेके चल रहे हैं हम, क्यूब लेके चल रहे हैं। एज अ होल मतलब लेंथ कम से कम हो, ब्रेथ ज़्यादा हो और डेप्थ तो सबसे ही ज़्यादा होगा। दैट्स गोना बी द आइडियल कंडीशन. For a given material, increasing the depth rather than B is more effective in reducing the bending. Since delta is proportional to D minus cube and only to B inverse, the length of the span should be small. Length को क्या करना है, small करना है, breadth को बढ़ाना है और depth को तो बहुत ज़्यादा बढ़ाना है. But on increasing the depth, unless the load is exactly the right place, difficult to arrange in a bridge with moving traffic, the dip bar may bend as shown in the figure 8.7b. जैसे आप देखते हैं जिस पे से ये ट्रैफिक जाता है, वो वाले जो लगे होते हैं ना, क्या करते हैं एक टाइम के बाद पुल वो ऐसे हैंग हो जाते हैं, जैसे फिगर बी में दिखाए हुए हैं. तो ऐसा नहीं होने चाहिए, वो इस तरह से इनको बनाना चाहिए. To avoid this, a common compromise is the cross-sectional shape shown in the figure. The section provides a large load-bearing surface and enough depth to prevent bending. This shape reduces the weight of the beam without sacrificing the strength and hence reduces the cost. The use of pillars or column is also very common in building and bridges. A pillar with round ends, as shown in the figure 8.9a, supports less load than that will a disturbed
distributed shape at the ends. 8.9 next page पे है. The precise design of a bridge or building has to take into account the conditions under which it will function, the cost and long period reliability of uses material etc. इस टाइप में जो A टाइप का पिलर है वो कम वेट कैरी कर सकता है, जबकि जो B का है जिसके डिस्ट्रीब्यूटेड एंड्स है वो ज़्यादा कर सकता है. The answer to the question why the maximum height of the mountain on earth is 10 km can also be provided by considering the elastic property of rock. A mountain base is not under uniform compression, no? And this provides some shearing stress to the rock under which they can flow. The stress due to all the material on the top should be less the critical shearing stress at which the rock flow. At the bottom of a mountain of height h, the force per unit area due to weight of the mountain is h rho g. Pressure जिसको हम बोलते हैं रो डेंसिटी होती है मटेरियल ऑफ द माउंटेन की. The material at the bottom experiences this force in the vertical direction and the sides of the mountain are free. Therefore, this is not a case of pressure or bulk compression. This is a shear component. Approximately h rho g. Now, if the elastic limit for a typical rock is this, equating this बस it's for the time pass. Let's summarize. Stress is a restoring force per unit area and strain is the frictional change in the dimensions. In general, there are three types of stress. Tensile stress, that is longitudinal and compressive. Second is shearing stress. Third one is hydraulic stress. For small deformation, stress is directly proportional to strain. For many material, this is known as Hooke's law. The constant of proportionality is called modulus of elasticity. The elastic moduli, this is Young's modulus, shear modulus and bulk modulus are used to describe the elastic behavior of object as they respond to deforming force that act on them. A class of solid called elastomers does not obey the Hooke's law. When an object is under tension or compression, the Hooke's law take the form F by A is equal to Y, that's Young's modulus, divided by delta L by L. A pair of force when applied parallel to the upper and lower face of the solid deforms so that the upper face moves sideways with respect to the lower. The horizontal displacement of the upper face is perpendicular to the vertical height. This type of deformation is called shear and the corresponding stress is called shearing stress. This type of stress is possible only in the case of solid. In this kind of deformation, the Hooke's law take the form F by A, G delta L by L. उसमें क्या था, Y था, इसमें क्या आ जाएगा, G आ जाएगा. बस इतना ही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है. डेल्टा L by L लगा लो या डेल्टा X by L लगा लो, जितना भी उसमें शिफ्ट आया है. When an object undergo hydraulic compression due to stress exerted by surrounding fluid, the Hooke's law take the form P is B delta V by V. B क्या है, bulk modulus, P pressure, delta V by V change in volume due to the pressure. And the important points to ponder out: in the case of a wire suspended from ceiling and stretched under the action of a weight F suspended from its other end, the force exerted by the ceiling on it is equal and opposite to the weight. However, the tension at any cross section A of the wire is just F and not 2F. Hence, tensile stress, which is equal to the tension per unit area, is equal to F by A. Hooke's law is valid only in the linear part of the stress strain curve. The Young modulus and shear modulus are relevant only for solids, since only solids have length and shape. Bulk modulus is relevant for solid, liquid and gas, all three. It refers to the change in volume when every part of the body is under the uniform stress so that shape of the body remain unchanged. Metal have larger value of Young's modulus than alloy and elastomers. A material with large value of Young's modulus require a large force to produce small changes in its length. In daily life, we feel that a material which stretches more is more elastic, but it is a misnomer. In fact, material which stretches to lesser extent for a given load is considered to be more elastic. In general, a deforming force is the one direction can produce strain in other direction. Also, the proportionality between stress and strain in such a situation can't be described by just one elastic constant. For example, for a wire under longitudinal strain, the lateral dimensions will undergo a small change which is described by another elastic constant of the material called Poisson's ratio. Lateral, longitudinal by lateral. Stress is not a vector quantity, since unlike a force, the stress cannot be arranged in a specific direction. Force acting on a portion of a body on a specific side of secretion has a definite direction.